welcome you watching. This is Exclusive with me, Shavan Sen. Tonight, our spotlight is on the world's most infamous cybercrime in Myanmar. A story that was first broken on Republic TV. Tonight, we get you further details of how Indians were essentially trapped. We'll get you all this and much more in this edition of This is Exclusive. Well, 300 crore rupees land deal row linked to Ajit Pawar's son. Ajit Pawar evades Republic when questioned. Republic TV investigates Pawar land scam. Sensational revelation shows lavish bungalow passed off as office plot. Not a negative statement, it's a very, very positive statement. I think the CM, what he meant was that Congress and Muslims have always been together right from 1947. Fight gets bigger over Revant, the Muslim comment. Azharuddin backs Congress equals to Muslim comment. 200 plus Indians escaped Myanmar cyber trap. Exclusive testimonies tonight on This is Exclusive. India conducts Trishul tri-service drill near Pakistan border. Northeastern regions on high alert. Ladies and gentlemen, a military raid in Myanmar has cracked open one of the world's most infamous cybercrime fortresses. We're talking about KK Park, Myanmar's sprawling Chinese mafia-run enclave on the edge of Mayawadi township, a glittering mirage of high-rises and neon lights that's lured over 1,000 desperate souls into its clutches with fake job offers and dream of easy money. But behind those walls are a web of frauds that siphon billions from victims across the globe, including from India. But in a masterstroke of diplomacy and resolve, India has launched Operation Safe Return. 2 Indian Air Force flights touching down just yesterday in the national capital, airlifting 270 of our nationals home from Thailand's border dust bowl. Tonight on This is Exclusive, a first-hand testimony in a short while from now. But first, take a look at this report. Nestled in the borderlands of Mayawadi Township, KK Park stands as a glittering mirage on the Myanmar-Thailand frontier. A sprawling enclave that's lured thousands with promises of prosperity. But beneath this Chinese-backed fortress lies Southeast Asia's cybercrime citadel. Run by triad-linked gangs, it's raked in billions, preying on victims worldwide. Since COVID-19, thousands have been trafficked into digital slavery, beaten, or worse if quotas aren't met. This shadowy compound evaded Myanmar's junta radar for years, until February's storm. A tri-nation crackdown with Thailand and China freed hundreds, but experts say it barely scratched the surface. Pressure mounted, leading to October's explosive raid. The October assault unearthed a high-tech lifeline. Over 30 illegal Starlink terminals, keeping scammers online even in blackouts. The junta's finger points squarely at the Karen National Union. They claim that KNU leaders leased the land and pocketed security fees, fueling the fraud while battling the regime. For Indians, the nightmare hit home hard. Lured by fake job ads for its gigs, over 465 crossed illegally into Thailand post-raid. They were detained, then rescued. This week, 2 Indian Air Force flights brought 270 such people back, including 26 women, in a Bangkok-Chiang Mai coordinated operation. 270 Indian nationals, they returned yesterday. They were got back from
my sort in Thailand on 2 special aircrafts. They were, when there was a crackdown in Myanmar, in some of those scam centers, they came into Thailand, and the Thai authorities thereafter undertook certain processes that were required on their side. After that, and once we verified the documents of all these people, made sure that they are Indian nationals, they were flown to India yesterday. The Ministry of External Affairs has issued a stark alert. Verify each overseas offer, beware the trap. As the cyber web runs deep, one raid may close KK Park's gates, but the scams slither on. Mohammad Feroz, in fact, is one such person who is among the many Indians who've been trapped in Thailand. Joining us tonight on this broadcast is his brother, Mohammad Firdaus. Mohammad Firdaus, बहुत-बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए। सबसे पहले आप जानना चाहूँगा कि क्या आपके भाई मोहम्मद फिरोज से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्या आपको पता था कि वो केके पार्क में था जब उस समय मिलिट्री रेड किया जा रहा था? नो सर, एक्चुअली लास्ट जब जिस दिन रेड हुआ है उसी दिन रात में उन्होंने व्हाट्सएप में कॉल किया मुझे कि भैया ऐसा तो प्रॉब्लम हो गया है और आपका यहाँ पे जो आर्मी है वो हम लोग को यहाँ से पकड़ के ले जा रहे हैं। तो वी वर नॉट अवेयर कि वहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है ऐसा, क्योंकि हम लोग ने तो वहाँ पे कंपनी के लिए जॉब करने के लिए ही भेजा था और ऑब्वियसली सारा कुछ वेरीफाई भी किया था। वो लोग बोले थे कि अभी स्टार्टिंग में विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं और जब वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा तो उसके बाद वर्किंग वीज़ा मिल जाएगा। ये तो बताइए, ऐसा कुछ आपके भाई मोहम्मद फिरोज करते क्या थे और कैसे ये शुरुआत हुई? क्योंकि मोहम्मद फिरोज जैसे कई लोग हैं, उन्हें ये लगा था कि वहाँ जाएंगे और आईटी पार्क में काम करेंगे, पर आखिरकार ये निकला केके पार्क, जिसे जाना जाता है कि एक तरह से चाइनीज़ माफिया रन बिजनेस जो वो करते थे। कई सारे साइबर फ्रॉड्स में उनका नाम आ चुका है। क्या आपको कोई भी आइडिया था कि आखिरकार आपके भाई म्यांमार पहुंच जाएंगे? नो सर, हम लोग को थाईलैंड के लिए ही बोला गया था और वहाँ पे ऑफिशियल जॉब के लिए था। वो समथिंग लाइक एचआर का जॉब था, मतलब बैक एंड में जो जॉब होता है सारा एंट्रीज वगैरह। जस्ट बिकॉज मेरा जो भाई है वो आपका ग्रेजुएट है और साथ में कंप्यूटर का उसको काफ़ी नॉलेज भी है। तो फॉर दिस रीज़न जो होता है बैक एंड में जो ऑफिस में जॉब होता है वो उसको लेके उसने जॉब इंटरव्यू भी दिया सारा कुछ। उसके बाद उसको फिर बोला कि थाईलैंड आने के लिए। ये फिर कौन थाईलैंड था? आने के बाद आप थोड़ा खुलकर बताएंगे कि आखिरकार ये कौन लोग थे जिन्होंने ये ऑफर लेटर दिया, और उसके बाद जब वो थाईलैंड पहुंचे आपको कब पता चला? क्योंकि जब एक बार वो म्यांमार केके पार्क पहुंच गए थे, ये कहा जा रहा था कि केके पार्क के अंदर जाने के बाद कोई फ़ोन कॉल नहीं कर सकता है, अपने परिवार वालों से बात नहीं कर सकता है। तो क्या आप अपने भाई से बात कर पा रहे थे जब वो केके पार्क के अंदर था? सर एक्चुअली क्या हुआ, जब वो थाईलैंड पहुंचा ये सब बात मुझे जब वो वहाँ पे रेड हुआ तब उसने बताया कि भैया वहाँ पे हम लोग को फोर्सफुली काम कराया जा रहा था और हम लोग को फ़ोन बस 1 घंटे के लिए दिन भर में फ़ोन देता था कि घर के सामने बात करना है और वहाँ पे एज अ मॉनिटर या फिर एज अ गार्ड वार्डन इस टाइप के लोग रहते थे और उनके सामने ही अपने घर वाले से बात करना है ताकि कुछ आप एक्स्ट्रा मतलब इन्फॉर्म नहीं कर सको अपने घर वाले को। इस टाइप का वहाँ पे सिचुएशन था। तो हम लोग को बोलता था कि ये चाइनीज कंपनी है और चाइनीज का रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत डिसिप्लिन में रहता है वहाँ पे लोग, ताकि प्रॉपर सोए प्रॉपर खाए, इसलिए फोन ज्यादा यूज करने नहीं देता है। इस टाइप का मतलब वहाँ पे कल्चर था, ऐसा हम लोग को बताया। फिर जब वहाँ फंस गया तो बोला कि डर से हम वहाँ बता नहीं पाते, क्योंकि हम लोग को थाईलैंड से जब म्यांमार लेके गया गया तो हम लोग को ऑन द गन पॉइंट लेके गया गया। हम लोग जब अपोज किए जाने के लिए कि हम लोग को वहाँ जंगल के रास्ते से क्यों लेके जा रहा है, ऐसा क्यों करके जा रहा है, तो हम लोग को ऑन द गन पॉइंट हम लोग को लेके गया। तो हम लोग वहाँ पे अपना जान बचाते कि हम लोग को इन्फॉर्म करते, इस टाइप का बात वो बोला। फिर उसके बाद जब नेट वहाँ पे उसका व्हाट्सएप कॉल से उसका जब ये खत्म हो गया, जब उसका नेट खत्म हो गया, कंपनी से निकल गया, तो मैंने फिर उसका नंबर पे इंटरनेशनल रोमिंग क्या आप पैक बता सकते डलवाया। हैं वो कितने दिन उसके अंदर था? केके पार्क के अंदर कितने दिन तक वो अंदर था? सर आई गेस 1.5 मंथ सर। 1.5 भी नहीं हुआ मंथ तक था। आप बातचीत नहीं कर पा रहे थे?
नो सर, बीच बीच में बात होती थी, लेकिन जब हम लोग ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि भाई कोई कंपनी में आप लोग बात नहीं कर पा रहे हो, तो उसने बोला कि वो चाइनीज कंपनी है, वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशन है कि प्रॉपर वहाँ पे टाइम काम करना है, प्रॉपर खाना है और प्रॉपर टाइम से सोना है, फोन ज्यादा यूज नहीं करना है, इसलिए वो क्या लोग बात उसे कुछ करने भी नहीं पता दे रहे चला थे। कि आखिरकार ये फ्रॉड करते थे? जो साइबर अरेस्ट होते हमारे देश में, जो साइबर अरेस्ट हो रहे थे या कई सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे थे, क्या आपके भाई को पता चला था कि आखिरकार यही वही सब स्कैम उसी पार्क के अंदर से किया जा रहा था? नहीं सर, वो एक्चुअली वहां पे सर उसको ऐसा कर दिया था ना सर, वो जब पकड़ा है वहां पे, जब म्यांमार आर्मी उसको वहां पे वो लोग सारे इंडियंस को जब अरेस्ट किया सर, तो उसने बताया मुझे, जब लास्ट मेरी 7 to 8 days बिफोर जब मेरी बात हुई थी, तो उसने बताया कि मेरे को यहाँ पे जबरदस्ती करके यहाँ पे झाड़ू पोछा ये सब भी करवा रहे थे हम लोग, और जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे ऑलरेडी और जो काम करने के लिए अपोज कर रहे थे, वो कुछ लोगों को ऐसा भी बोला कि कुछ लोगों को वहां पे कोई शायद कोई रशिया की एक लड़की थी, तो उसको वहां पे जान से भी मार दिया, इस टाइप का मतलब बोल रहा था, बहुत डरा हुआ था। बस लास्ट वही बात हुआ, और लास्ट उसने व्हाट्सएप में मुझे आपका ये लोकेशन भेजा था, मेसोट का कोई जगह है मेसोट करके, वहां का लोकेशन भेजा था, बस वही लास्ट बात हुई, उसके बाद कोई बात नहीं हुई सर। जब वो रेड किया गया और उसके बाद वो उन लोग थाईलैंड पहुंचे क्योंकि वो बॉर्डर इलाके में पर थे, क्या उसके बाद आपकी कोई बातचीत हुई और उनका अब क्या कहना है कि कब तक वापस आ सकते हैं वो? सर मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है, और जो हमारे यहाँ के लोकल लोकल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको एप्लीकेशन लिख के दिया है कि आप फैक्स करिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने ये दोनों जो भी प्रक्रिया है ये करवा दिया है। बाकी सर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर है कि कब वो लोग वापस लेके आएंगे सर। एक तो मैंने सुना है कि एक फ्लाइट आया है अभी वहां से, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि मेरा उसमें छोटा भाई उसमें है या नहीं है, ये चीज मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं मिल आखिरी पा बार रही अपने छोटे भाई से कब बात आपने की? सर। इट्स ऑलमोस्ट सर 8 to 9 डे हुआ सर, जब मेरी बात हुई थी उससे। क्या उसने कभी ये कहा कि किस तरह से उनके साथ टॉर्चर किया जा रहा था? और जैसे कि आप कह हाँ रहे थे सर, कि वो एक रशियन उस लड़की थी, उसे जान से मारने की धमकी दिया जा रहा था, क्या आपके भाई को भी ऐसे धमकी दिया जा रहा था? और ये लोग कौन थे? क्या वो आर्म्ड बॉडीगार्ड्स थे? क्या वो म्यांमार आर्मी के थे? कुछ इसकी जानकारी आपको मिल सर पाई? ये एग्जैक्टली तो नहीं पता सर, कि लेकिन ये बोला बोला सर कि वो गनमैन लोग हैं, जो जब थाईलैंड से जब उनको म्यांमार की तरफ ले जाया गया था, तो वो बोले थे कि कोई गन्समैन है, वो लोग ऑन द पॉइंट ऑफ गन, वो लोग जबरदस्ती करके, क्योंकि बोला कि हमको पैदल लेके गया है आपका थाईलैंड से वहां तक, क्या बोलते हैं, म्यांमार तक, ऐसा बोला था। फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक ऐसी स्टोरी है जो रिपब्लिक टीवी पहले दिन से दिखा रही, भारत में अकेले हम लोग ने इसके बारे में आवाज उठाया है। मैं यही दरख्वास्त करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी और सर एक बात के लिए मैं थैंक यू भी बोलना चाहूंगा सर, कि जो मैंने जो फर्स्ट वीडियो आप लोगों की थी, उसी में मैंने अपने भाई को भी रिकॉग्नाइज किया था, और मेरा भाई बैठा हुआ था। तो आपने तो जो तस्वीर हमारे पास, तो आप ये कह रहे हैं कि जो तस्वीर हमने दिखाई उस तस्वीर में आपके भाई है? वीडियो जो फर्स्ट वीडियो आप लोगों का कवरेज का था, उसमें मेरा भाई वहां मेंशन था, और मैंने ऑब्वियसली जब 20 साल से अपने भाई को देखते हुए, तो दूर भी रहेगा तो पहचान जाता है इंसान, तो उसमें मैंने अपने भाई को देखा था, उसके लिए सर रिपब्लिक टीवी का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ऐसी बात है जो हम लोग पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, और हम चाहेंगे कि जितने भी भारतवासी हैं वो वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Ladies and gentlemen, a land deal that has gone wrong has ignited a firestorm. A prime government real estate in the upscale enclaves of Koregaon Park and Mundwa parcels worth a staggering 1,800 crore rupees on the open market has allegedly vanished into private hands for a paltry 300 crore rupees. And at the center of this alleged heist is of public wealth is Parth Pawar, son of Deputy Chief Minister Ajit Pawar, through his company Madhya Enterprises LLP. Ajit Pawar was cornered by Republic TV today, but he dodged our cameras. The controversy has deepened after landowner Chandrakant Gaikwad spoke to Republic TV, claiming he has seen Parth Pawar's name on the sale document. Here's the full story.
and then we also get you an exclusive input. A deal worth 1,800 crore, a powerful name and questions that won't go away. Maharashtra's political corridors are once again buzzing, and this time all eyes are on Ajit Pawar's son Parth Pawar. Following the scam, the Maharashtra government has ordered a high-level investigation into the scam. In the land scam, a 43-acre plot in Pune's Mundwa worth around 1,800 crore was allegedly sold for just rupees 300 crore. The land in question, approximately 40 acres of government-owned Maharvatan land, was reportedly sold to Amadya Enterprise LLP, a firm in which Parth Pawar was a partner. Surprisingly, investigators found that a 300 crore land deal would have paid at least 21 crore in stamp duty, but it was registered for just rupees 500. Learning about the scam, Chief Minister of Maharashtra Devendra Fadnavis has also taken action and ordered for an inquiry in the matter. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री ही अशा कुठल्या प्रकाराला पाठीशी घालतील असं माझं मत नाही, कारण या संदर्भात आमच्या सरकारचं एकमत आहे. कुठेही अनियमितता झाली असेल तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत. त्यामुळे निश्चितपणे ही अनियमितता आहे की नाही हे पडताळून पाहिलं जाईल. अनियमितता असेल तर त्याच्यावर अतिशय कडक कारवाई ही केलीच जाईल. Further details emerging in the case reveal huge allegations by the landowner Chandrakant Gaikwad. Meanwhile, the farmers of Maharashtra have also spoken on this issue, mounting pressure on Parth Pawar. हम ओनर है, हमारे जैसे और भी कई ओनर है, तो और जो ओनर है उन्होंने उनके राइट्स उनको दिए थे, बेचने के लिए नहीं दिए थे, नाम लगाने और उसको उसके ऊपर कुछ प्रोसीजर करने के लिए वो पावर पैटर ने दिया था. लेकिन अभी उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, वो उनका जिम्मेदारी. लेकिन हम हमारे हिस्से का 9 एकड़ 19 गुंठे का पैसा किसी के पास से लिया नहीं और हमने बेचा भी नहीं. फिर वो कैसे बोल रहे जमीन बेचा, हमारा हिस्से का किधर गया फिर? When Republic tried to question, Deputy Chief Minister Ajit Pawar on the matter remained silent. सर आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा है, आपके बेटे के ऊपर आरोप लगा है. Reacting on the allegations against Parth Pawar, Congress leader Vijay Wadettiwar made a big statement and called for top-level action. हम तो सीएम को भी ऐसे घोटाले निकाले जाए महाराष्ट्र से और त्वरित कार्रवाई करते जाए, पर इसमें पृथ्वीराज पाटिल एक डायरेक्टर है, उसके ऊपर हुआ, सब रजिस्ट्रार पे हुआ, पर ये इसमें गुना और शीतल तेजवानी पे उसमें ऑफेंस दाखिल हुआ. पर जिसके नाम से ये इतने बड़े कंपनी है उसके ऊपर गुना दाखिल नहीं हुआ. हो सकता है इसमें कल चलकर ईडी आए, क्योंकि 300 करोड़ का घोटाला है, पैसे कहाँ से है, उसका वे आउट कहाँ से है, सब कुछ आ जाएगा. ये कोई 5, 10, 20 करोड़ का काम नहीं है. और ये 300 करोड़ वाइट में दे तो फिर ये बाकी का व्यवहार भी होता है, क्योंकि मार्केट वैल्यू से आजकल ये सब जमीन खरीदी की जाती है. ये सब मुझे दिखता है कि एक बात स्पष्ट होती है, सरकार कार्रवाई करना चाहती है और बड़े लोगों को बचाना भी चाहती है. After major lapses were revealed in the scam, one official has been suspended and a special committee has been tasked with submitting its final findings within 8 days. With top leaders under scrutiny, Maharashtra watches closely as a high-level probe could shake the state's political corridors. Well, Republic is the only news network to have gotten the first official response coming in from the police with regards to the Pawar land scam. Instead of directly addressing the matter, they have now essentially said that the entire investigation is underway and they wouldn't like to really comment on it. First response coming in from the Maharashtra police. सर, ये पुणे लैंड स्कैम का जो केस है, ये आपके पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर हुआ है. अभी तक क्या फाइंडिंग्स है इस केस में? पुलिस स्टेशन में लैंड स्कैम के बारे में एक केस कल दाखिल हुआ है. इसमें 3 लोगों के खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर हुआ है. दुय्यम निबंधक सब रजिस्ट्रार ऑफिस बाउदन में है, वहाँ पे
एक दस्त रजिस्टर हुआ था, उसमें जो वैल्यू दिखाई है वो 300 करोड़ है, और उसमें जो टैक्स स्टैम्प ड्यूटी भरना था वो 6 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट की स्टैम्प ड्यूटी होती है, वो ना भरते हुए सिर्फ 500 रुपये के स्टैम्प पे ये दस्त हो गया। इसमें कॉन्स्पिरेसी है। ये 3 लोगों के खिलाफ बाउदन पुलिस स्टेशन में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। वो 3 लोग कौन कौन हैं? उसमें एक सब रजिस्ट्रार है, और लिख के देने वाला और लिख के लेने वाला। उसमें जो जगह लिख के लिया है वो दिग्विजय पाटिल है, और लिख के देने वाली तेजवानी करके है, शीतल तेजवानी। वो तीनों के खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर हुआ है। तो जिसको लिख के दिया है ये MAD एंटरप्राइज लिमिट LLP के ये पार्टनर है जो दिग्विजय पटेल, वो कंपनी के का क्या डिटेल्स मिला है अभी तक? अभी तक तो सिर्फ आज वो जो दस्त है वो हस्तगत किया है, उसका पंचनामा किया है, और अभी उसका स्टडी चल रहा है। जो भी बातें सामने आएंगी उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। Well, the last story that we are getting to you tonight, it's the inside story as to what was the reason behind the highest voter turnout that Bihar has seen in 25 years, with women voters emerging as the driving force behind this surge. Data has indicated that at least 5% increase in female voter participation compared to previous elections, marking a major shift in the state's electoral dynamics. Sources revealed that the RSS basically launched its extensive Mission Trishul campaign in February, organizing between 300 to 400 meetings in every constituency, totaling nearly 50,000 to 60,000 meetings across Bihar. What impact would that essentially have, and who exactly has the advantage with more women voters really coming out? So the inside details of what is largely seen as Operation Trishul that was basically carried out by the RSS. We'll try to also go across to my colleague and our executive editor, Niranjan. In fact, while we get Niranjan, just the details that we have, it's quite clear that there has been a spike. It's the 25-year record that has been broken, and while this was essentially being reported, the idea was basically to see what perhaps led to this bump. It seems that this entire exercise that has been carried out by the RSS has had its own impact on the ground. The very fact that roughly about 300 to 400 meetings were being carried out, 50,000 to 60,000 meetings that have been held in Bihar has had its own impact on the ground. More of women voters are essentially now coming out, and women voters coming out and voting would actually have a direct impact. Will it be advantage Nitish Kumar, or would it be advantage Tejasvi? That is something that one will have to wait and watch. But RSS had this entire plan drawn up over the last couple of months. In fact, they started in the month of February itself. Now we've got inside details of how there has been an historic turnout in Bihar, and that was essentially because of the meticulous planning that was being done by the RSS here. And the very fact that these meetings were basically being carried out in multiple districts across Bihar, what we have essentially seen is the fact that these meetings were being carried out with a specific agenda of one, to basically propagate about the developmental work that has essentially been done, and also exhorting more people to come out and vote. Even in places, say for example, Patna constituency also, in Patna also, remember there have been several constituencies where we have seen a spike, which is quite unusual because we have not essentially seen this in the past, and this is a 25-year record that has now been broken by the people of Bihar, and there has been a direct impact in various districts also. Now I'm going to just quickly take you through some of the responses now basically coming in with regards to what could have been the reason. There has been a 5% increase. Now the data which we have seen and we have perused, it shows that it's a 5% increase in female vote participation. Abhishek, more details now basically coming in of how the RSS played a pivotal role, with over several meetings being conducted since the month of February. Well, Shravan, that's part of the RSS centenary
program across the country. But it might have had some positive fallout so far as the BJP is concerned in Bihar. But remember, voter turnout is a summation of a lot of factors. So parties mobilize their cadres, the cadres mobilize their respective neighborhoods, the election commission campaign, the SIR, and the fact that SIR led to this sense that nobody should be missing out on their voting. The women-centric schemes, the Jivika Didis, the cash dole transfer scheme of the state and the central government together, which was inaugurated by the Prime Minister just ahead of the campaign. And then, of course, the push coming in from the opposition also in terms of taking care of women, specifically with the increased cash doles. So everything would have come together really to impact the overall vote surge, and within that, specifically of women. Remember, the entire campaign of the NDA is premised on not getting the Jungle Raj back in Bihar, and that's something which is really a matter of concern for women specifically. So it's likely that they really got mobilized and led to this vote surge, and women contributing a greater part of that turnout that is highest in 25 years in Bihar, as we have seen yesterday. Thank you very much, Abhishek, for getting us the inside details. Get ready for the new Business of Life, Republic Media Network's brand new series driven by Mercedes, where Arnab Goswami steps out of the newsroom and into motion, journeying through conversations with trailblazers who are redefining success, purpose, and crafting the new business of life. In the first episode, Grammy Award winner Ricky Cage joins us in a candid conversation on music, purpose, and the rhythm of life itself. The new Business of Life driven by Mercedes, where ambition meets motion. This weekend only on Republic TV.